प्यारे छात्रों एवं मित्रगण, सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूँ। आज हम हिंदी विषय अंतर्गत 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दाज्यू। दाज्यू शब्द का अर्थ होता है बड़ा भाई। इस पाठ के लेखक है शेखर जोशी। મિત્રો, સર્વપ્રથમ આપણે જાણીશું કે આ પાઠમાં મુખ્ય શું વાત કરવામાં આવી છે। પાઠ 15મો દાજ્યુ। દાજ્યુ શબ્દનો અર્થ થાય છે મોટો ભાઈ। તો આ પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રેમથી કહેલા બે શબ્દો અપરિચિત વ્યક્તિને પણ પાસે લાવી દે છે અને તિરસ્કાર ભરેલી વાણી પરિચિત વ્યક્તિને પણ અપરિચિત બનાવી દે છે। એવી જ રીતે આ પ્રસ્તુત વાર્તામાં બાળક મદન અને જગદીશ બાબુ વચ્ચે આત્મીયતા અને તિરસ્કારનો આવો જ એક વિપરીત સંબંધ બને છે। પહેલાં આત્મીયતા કેળવાય છે અને ત્યારબાદ એનો તિરસ્કાર થાય છે। જેને આપણે પોતાના સમજીએ છીએ તે જ વ્યક્તિ ક્યારેક આપણા હૃદયને ઠેસ પહોંચાડે છે। તે વાત જ આ વાર્તાનું કેન્દ્રબિંદુ છે। तो चलो मित्रों, આપણે આ પાઠના મહત્વના મુદ્દા વિશે बात करिए। सबसे पहले है होटल में काम करने वाला लड़का। होटल में काम करवा वाळो छोकरो जे 9 के 10 वर्षनी उंमरनो ज छे અને એને ત્યાં એક અજાણા જગદીશ બાબુ કરીને ત્યાં ચા પીવા માટે એના કેફેમાં આવે છે। તો ત્યારે એનો પરિચય થાય છે। જગદીશ બાબુ પોતે આખા શહેરમાં એકલતા અનુભવે છે, એકાકીપણું અનુભવે છે। ત્યારે આ છોકરો જ્યારે ચા સાહેબ એવું કહે છે ત્યારે એનાથી પરિચય થાય છે અને પોતાનું એકલતાપણું दूर થાય છે। પછી जगदीश बाबू से परिचय। जगदीश बाबू से परिचय होता है तभी पता चलता है कि वह दोनों पड़ोस के गांव के है। ત્યારે એને ખબર પડે છે કે બાજુના ગામના જે છે અને જે આ છોકરો હતો જે હોટલમાં કામ કરતો હતો તેને જગદીશ બાબુ પ્રત્યે આત્મીયતા બંધાઈ જાય છે। તેને આ અજાણ્યા શહેરની અંદર પોતાના મોટા ભાઈ મળી ગયા હોય એવી રીતે એને દાજ્યુ દાજ્યુ એટલે કે મોટા ભાઈ કહીને સંબોધન કરતો હતો। પરંતુ આ જગદીશ બાબુને આ દાજ્યુ કહે એ પસંદ નહોતું। એક દિવસ જગદીશ બાબુ તેને બોલાવીને કહે છે કે તું મને દાજ્યુ દાજ્યુ જે કહે છો એ શા માટે કહે છો, એમ કઠોર વચનમાં એનું અપમાન કરી નાખે છે। મદન કાંઈ પણ બોલતો નથી અને નાનકડા છોકરાના માનસ ઉપર ઘણી ગહન અસર થાય છે, પરંતુ એ કાંઈ બોલી શકતો નથી અને પછી પહેલાંની જેમ અજાણ્યો બની અને રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે। અને કોઈ ગ્રાહક આવી અને એને નામ પૂછે છે તો કહે છે કે મને બોય કહે છે સાહેબ। તો આવી રીતે આ પાઠમાં અપરિચિત વ્યક્તિનું પોતાનાપણું અને ત્યારબાદ પોતાનાપણું થઈ ગયા પછી આત્મીયતા બંધાઈ ગયા પછી અપરિચિતતા સુધીનો સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જે આપણે આ પાઠમાં જોઈશું। ચાલો આપણે અભ્યાસ કરીએ। પાઠ 15મો દાજ્યુ, જેના લેખક છે शेखर जोशी। पाठनी शुरुआत करिए। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती आँखों को चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। અહીં એક કેફેની વાત કરવામાં આવી છે કે સાઇનબોર્ડવાળું એક નાનકડું કેફે છે જ્યાં જગદીશ બાબુએ આ છોકરાને પહેલી વાર જોયો હતો। ગોરો રંગ હતો, એની ભૂરી આંખો અને ચાલમાં એક અનોખી મસ્તી। આવો આ છોકરો એના જો શરીરનું એના ઉંમરનું જો અનુમાન કરવામાં આવે તો 9 થી 10 વર્ષનો એ લાગતો હતો। આગળ જોઈએ। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे
तो वह सामने था। અડધી સળગેલી સિગરેટનો એક લાંબો કશ ખેંચી અને જગદીશબાબુ જ્યારે કેફેમાં એટલે કે કેન્ટીનમાં પ્રવેશ કર્યો તો એ ટેબલ ઉપરથી ડીશો ઉપાડી રહ્યો હતો અને પાસના જ ટેબલ પાસે એ જ્યારે બેઠા તો એ છોકરો એમની સામે હતો। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पीने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही ચાય હાજર થી। હવે જ્યારે જગદીશ બાબુએ કેફેમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એની સામે એ ઊભો હતો અને એને લાગ્યું કે આ કલાકોથી એની એ જગ્યા ઉપર આવવાવાળા વ્યક્તિની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો હોય। એ કાંઈ બોલ્યો નહીં, પણ નમ્રતા પ્રદર્શન માટે એ થોડો હસ્યો અને આ હસીમાં જ આખું મેનુ સમાયેલું હતું। અહીં મેનુ શબ્દ માટે મીનુ શબ્દ વપરાયો છે। મીનુ એટલે મેનુ, જે હોટલની જે પણ વસ્તુ હોય એનો ભાવ જે મેનુમાં લખેલો હોય છે, તો એની આંખોમાં જ આખું મેનુ સમાયેલું હતું। સિંગલ ચાયનો જ્યારે ઓર્ડર મળ્યો ત્યારે એ એકવાર ફરીથી હસ્યો અને પલક ઝપકતાની સાથે જ એ ચાય હાજર કરી દીધી। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसर्ग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। અહીં લેખક કહે છે કે મનુષ્યની ભાવનાઓ છે એ ખૂબ વિચિત્ર હોય છે। નિર્જન કે એકાંત સ્થાનમાં પણ કોઈ સાથે ન હોય ત્યારે પણ ક્યારેક ક્યારેક માણસને એકલતાનો અનુભવ ન થાય। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। લાગે છે કે આ એકલતા છે એમાં પણ ઘણું બધું પાસે છે। કિતના અપના હૈ, કેટલો પોતાનાપણું છે, આત્મીયતા કેટલી છે। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। परंतु आनाथी बिल्कुल विरुद्ध, विपरीत એટલે વિરુદ્ધ, ક્યારેક ક્યારેક સેંકડો હજારો લોકો, હજારો નરનારીઓની વચ્ચે જનરવમય, જન એટલે લોકો, રવ એટલે અવાજ અને મય એટલે ભર્યું, લોકોનું અવાજ ઘોંઘાટ ભર્યું વાતાવરણ હોય એમાં રહીને પણ આપણને એકલાપણાની અનુભૂતિ થાય છે। ક્યારેક ક્યારેક કોઈ સાથે ન હોય તો પણ પોતાનાપણાનો અહેસાસ હોય, જ્યારે ક્યારેક કોઈક સાથે હોય બધા તો પણ આપણને અજાણ્યું લાગે છે। જો કુછ હૈ વહ પરાયા હૈ, કિતના અપનત્વહીન, જે પણ છે તે પારકું છે, કેટલું આત્મીયતા વિનાનું। पर यह अकारण ही नहीं होता, आ कारण वगर न होय। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। आ एकलतापणानी जड़ क्यांक विरक्ति एटले के दूर होय कोई व्यक्ति एना मूल में रहेलू छे। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोर मगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू दूर देश थी आव्या छे, एकला छे अने चौकनी चहल पहल, तेना वातावरण अने होटलना अवाजमां एने एवुं लागी रह्युं छे के बधुं ज पारकું छे, अपनत्वहीन एटले पारकું छे। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। कदाच કેટલાક દિવસો રહીને અભ્યસ્ત હો જાને પર, અભ્યસ્ત એટલે અભ્યાસી, આ વાતાવરણના અભ્યાસી થઈ ગયા પછી એને આ વાતાવરણમાં પોતાનાપણની અનુભૂતિ થવા લાગે। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें
अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे या होटल। પણ એને આજે લાગે છે કે આ કેટલું પોતાનાપણાની સીમાથી દૂર છે, કેટલું દૂર છે, અને ત્યારે જ અનાયાસ એને યાદ આવવા મળે છે કે જ્યાં એને બાજુવાળા આદમી, બાજુવાળા જે લોકો રહેતા હતા, સ્કૂલ કોલેજના છોકરા અને એના આજુબાજુના જે હોટલ હતા એ પણ એને યાદ આવવા લાગે છે। ચાય સાબ, જગદીશ બાબુને રાખદાની મેં સિગરેટ ઝાડી। ચાય साहब એવું સંભળાતા જ जगदीश बाबूए राखदानी में सिगरेट फेंकी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में ही वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। એને લાગ્યું કે આ અવાજમાં એ જ રહેલું છે જેમાં એને ખાલીપો અનુભવાઈ રહ્યો છે, એને એકલતા અનુભવાઈ રહી છે, એટલે એણે શંકાનું સમાધાન કરી લીધું। ક્યાં નામ હે તુમારા? શું નામ છે તારું? છોકરાને પૂછે છે જગદીશ બાબુ। મદન। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा मदन, तू ક્યાં રહે છો? પહાડ કા હું બાબूजी, પહાડી વિસ્તારનો છું બાબूजी। પહાડ તો સેંકડો હે, આબુ, દાર્જિલિંગ, મસૂરી, શિમલા, અલમોડા, પહાડ તો ઘણા બધા છે। આબુ, દાર્જિલિંગ, મसूरी, शिमला, अल्मोड़ा आ बधा पहाड़ी विस्तार है। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तारू गाम कया पहाड़ी विस्तार में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। पहला एने जिल्ला विषे ख्याल नहोतो, पण हवे एने ख्याल आवी गयो, कारण के 9-10 वर्षनो छोकरो छे, एटले एणे हसीने कह्युं, मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ानो ते हतो। बराबर याद राखजो, ते पहाड़ी विस्तार कयो हतो? अल्मोड़ा हतो। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? ये अल्मोड़ा में कયું गाम छे? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। विशेष जानवा माटे जगदीश बाबूए तेने पूछ्યું। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। आ प्रश्न में एने थोड़ोक संकोच में नाखी दीधो। कदाच एना गामनी निराली संज्ञा एटले के कंईक अनोखुं नाम हशे, विचित्र नाम हशे, एना कारणे ए संकोच में हतो। एटले आ वातने टाळता बोल्यो कि ए तो दूर छे साहेब, अल्मोड़ा थी 15-20 मील दूर हशे। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो पण कंईक नाम तो हशे ने? जगदीश बाबूए जोर करीने पूछ्યું। डोटिया लगो, यह सकुचाता हुआ सा बोला। थोड़ोक संकोच पामता बोल्यो, डोटिया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। अत्यार सुधी एने एकलापणुं लागतुं हतुं ए दूर थई गयुं। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती यानी कि पास वाले गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। જ્યારે એને જગદીશ બાબુએ કહ્યું કે હું તેની બાજુના જ ગામનો છું, ત્યારે એને લાગ્યું કે એના હાથમાંથી પ્રસન્નતાના કારણે ટ્રે છે એ નીચે પડી જશે। उसके मुँह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। एना मोढामांथी शब्दों निकलता पण रही गया। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जाने ए खोवायेलो ए नानी उंमरमां ए काम करी रह्यो हतो, ए पोताना अतीत एटले के भूतकाळने ए याद करी रह्यो होय एवुं लागतुं हतुं। अतीत, गाँव, ऊँची पहाड़िया, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई, ये सब याद आने लगते हैं।
मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। મદનને એવું લાગ્યું કે જગદીશ બાબુ જે છે એ આ બધા જ પરિવારના સદસ્ય છે. ઈજા નહીં, આ ઈજા નથી તો કોના જેવા લાગે છે? નહીં બાબા, નહીં દીદી, નહીં ભૂલી, નહીં दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। 2-4 દિવસોમાં જ મદન અને જગદીશ બાબુને વચ્ચેની જે પારખાપણાની અજનબીપણાનું હતું એ ખાઈ હતી એ દૂર થઈ ગઈ અને જ્યારે જગદીશ બાબુ ટેબલ ઉપર બેસતા તરત જ અવાજ સંભળાતો, दाजू जय हिंद, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी यूँ यानी कि हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बाएं की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? દાજ્યુને આવી રીતે દાજ્યુ દાજ્યુ કહી અને બોલાવતો, કારણ કે એને પોતાના ભાઈની એમાં પ્રતીતિ થતી હતી એટલે કહેતો, દાજ્યુ જય હિન્દ, દાજ્યુ આજ તો ઠંડ બહુ હે, દાજ્યુ ક્યાં આજ હિમ પડેગા? આવા બધા પ્રશ્નો એની સાથે પૂછતો. અને જ્યારે છોકરો વાત કરતો હોય જગદીશ બાબુ સાથે અને તરત જ મદન એવું સંભળાતા એ ઝડપથી અવાજની પાછી ધ્વનિ સંભળાય એ પહેલાં ત્યાં પહોંચી જતો અને ઓર્ડર લઈ અને પાછો જગદીશ બાબુ પાસે આવતો અને કહેતો કે દાજ્યુ કાંઈ ચીજ જોઈએ છે, કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે? ત્યારે કહે છે, પાણી લાવો, पानी आपो। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। अने आ लाव्यो एवं कहतो अने जेम माँ पोताना दीकराने चूमे छे एम आतुरता साथे ए शब्दों एनी प्रतीक्षा करतो हतो। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। કેટલાક દિવસ પછી એને આ શહેર જે અજાણ્યું લાગતું હતું એ એકાकीपन दूर થઈ ગયું, એકલાપણું दूर થઈ ગયું। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। હવે એને આ ચોક છે, હોટેલ છે એ એટલું જ નહીં પણ આખું શહેર એને પોતાનું લાગવા લાગ્યું। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यहाँ मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू कहता था। पण हवे एने आ मदननी पासेथी जे वारंवार दाजू दाजू करे ए कहेवड़ावुं पसंद हतुं नहीं। परंतु आ मदन हतो कि जे बीजा टेबलो परथी पण दाजू दाजू एने कहेतो हतो। मदन इधर आओ बोलावे छे मदन ने पासे, इधर आओ, अहीं आओ। आया दाजू, आवियो दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। दाजू शब्द जे वारंवार कहे छे एना उपर एना मध्यम वर्गीय संस्कार जागी उठ्या। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टीक सकी। एटले पोतानापणानी अपनत्वनी जे दोरी हती ए अहंकार सामे टकी शकी नहीं। दाजू चाय लावू एवं ज्यां पूछे छे त्यां कहे छे जगदीश बाबू, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? चा तो नहीं जोती पण आ दाजू दाजू केम दिवस रात तू बोल्या करे छो? कोईनी प्रेस्टीजनो पण तने आ ख्याल नहीं? प्रेस्टीज एटले थाय छे प्रतिष्ठा, मान सन्मान, कोईनी प्रतिष्ठानुं तने आ भान नहीं एम खीजाई जाय छे। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जगदीश बाबूना मोढामांथी क्रोधना कारणे शब्दों निकली गया। शब्दों पर एनो अधिकार न रह्यो। मदन प्रेस्टीजनो अर्थ समझी शकशे के नहीं
એ પણ એના મગજમાં કે એનું ધ્યાન ન રહ્યું, પણ મદન તો કંઈ સમજાવ્યા વગર બધું જ સમજી ગયો હતો। મદન કો જગદીશ બાબू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। જેને પોતાનો ભાઈ માનતા હતા એનાથી એને ખૂબ દુઃખ લાગ્યું। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। એટલે મેનેજર આગળ માથું દુખે છે એવું બહાનું કરી અને પોતાના ગોઠણ સાથે એ માથું નાખી અને ખૂબ હિબકા ભરી, સિસક્યા ભર એટલે કે હિબકા ભરી અને रोतो रहियो। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। पोताना गाम थी दूर आ जगदीश बाबूना प्रत्ये आत्मीयता जो बंधाई जाए तो ये स्वाभाविक हतो। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। हवे एने लाग्यो कि एना जीवन में जे मातानी छाया हती, दीदीना प्रत्येनो प्रेम हतो, ए बधुं ज एक साथे दूर वही गयो छे अने आ जे आघात लाग्यो हतो एमांथी बहार आवी अने ए कंईक निश्चय करे छे। माणस ज्यारे पोताना आघातमांथी बहार आवीने जे निर्णय करे छे ते जे भावुक थई, भाववश थईने जे निर्णय करे छे एना करता वधारे विवेकपूर्ण होय छे। અહીં આ વાક્યમાં લેખકે કહી દીધું છે કે આ મદને એક વિવેકપૂર્ણ નવો નિર્ણય કરી લીધેલો છે, પોતાનો નવા જીવનનો નિર્ણય કરી લીધેલો છે। મદન પૂર્વવત કામ કરને લગા। મદન પહેલાંની જેમ કામ કરવા लाग्यो। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। बीजे ज दिवसे होटल जती वखते अचानक जगदीश बाबूनी मुलाकात पोताना बाळपणना सहपाठी हेमंत साथे थई गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। होटल में पहुंचतानी साथे जगदीश बाबूए एने इशारा साथे मदन ने बोलाव्यो, पण एमने लाग्युं के ते जाणी जोईने एनाथी दूर दूर भागवानो प्रयत्न करी रह्यो होय। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। बीजी वखत बोलावता वखते ज ए मदन आव्यो। आज उसके मुँह पर वह मुस्कान न थी। आज एना मोढ़ा पर ए खुशी न हती और नहीं उसने क्या लावू दाज्यू कहा। ए पण न कह्यू के शू लावू दाज्यू, एवं पण कहीं कह्यू नहीं। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। पोते जगदीश बाबू ने ज कहेवुं पड्युं के 2 चा 2 आमलेट। परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। पण आ ऑर्डर सांभळतानी साथे ज ज्यारे एम कहेतो लाया दाज्यू, ए कहेवानी बदले लाया साहब एवुं कहीने ए चाल्यो गयो, जाणे ए कंई अपरिचित ज होय। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत एनो जे मित्र हतो जगदीश बाबूनी साथे सहपाठी अभ्यास करतो हतो, ए कहे छे के आ कदाच पहाड़ी विस्तारनो छे। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। हाँ एवं कहीने एणे वार्तानो विषय बदली नाख्यो, वातनो विषय आखो बदली नाख्यो। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। अत्यारे हेमंत पूछे छे के शू नाम छे तारू? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। थोड़ीक वार माटे टेबल पर गंभीर मौन छवाई गયું। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। जगदीश बाबूनी आँखों चाने प्यालामां ज रही गई।
मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जे एनो समय हतो ए जूनो अतीत ए वीतवा लाग्यो। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना। थोड़ा दिवस पहला जगदीश बाबू આવ્યા હતા ત્યારે આવી જ રીતે નામ પૂછ્યું હતું કે શું નામ છે તારું? फिर राजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया।